हाय गाइस क्लास 9 CBSE चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। चलिए आज इसको हम समझते हैं। एक्चुअली नंबर सिस्टम क्या है ना, जो नंबर्स है ना, जो रियल नंबर जो हम सोचते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 0 -1 -2 -3 -4, तो पूरा जो नंबर का सिस्टम वो आज हम समझने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जितना भी नंबर्स है उन नंबर्स को मैंने ये नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है, कि नंबर लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है ना। तो देखते हैं, जैसे कि ज़ीरो है, ज़ीरो से अगर आगे जाएंगे, जैसे कि ज़ीरो है, फिर उससे अगर आगे जाएंगे तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, फिर 5 6 7, इसी तरह 8 9 10 100 1000। आई डो नॉट द लास्ट नंबर, सो लेट्स टेक द लास्ट नंबर टू बी इन्फिनिटी। और अगर अब इस तरफ देखेंगे तो ज़ीरो से आगे क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इसी तरह -8 -9 -10, द लास्ट नंबर आई डो नॉट नो द लास्ट नंबर, सो लेट्स टेक द लास्ट नंबर टू बी माइनस infinity. Okay, so these numbers are called as number system. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इसको हम अलग अलग नंबर्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो, ज़ीरो, ज़ीरो से आगे कुछ नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स है, मतलब दिस साइड you'll find negative numbers, this side you'll find positive numbers, है ना। just wait, let me take the rulers. Okay, so this side, from starting from 1 1 2 3 4 5 6 7, these are positive numbers, and from starting from -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, these are negative numbers. So if I split the numbers, for example, if I take the numbers from 1 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कितना सारा नंबर से, the last number let's take to be infinity. Infinity is the last number which we do not know. It may be crores. Okay, so these numbers are called as natural numbers. So I'll write the natural number here, 1 2, from here 3 4 5 6 7 8 9, dot 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 dot. I do not know the last number, so let's take this number to be infinity. Okay, so is it clear? Natural numbers are counting numbers, are those numbers which start from 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like this. Now if I add 0 to this number, अगर इसमें हम 0 add करते हैं natural numbers में, then we'll get what? Whole numbers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dot dot dot. I do not know the last number, let's take the last number to be infinity. Is it clear? है ना, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या है, अगर कोई भी नंबर हम 1 से लेते हैं तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर उसमें 0 ऐड करते हैं, मीन्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. Now let's come to the integers. So all the numbers, positive numbers, negative numbers, are called as integers, or in other words, integers are whole numbers, natural numbers, and the negative numbers also. So all the numbers, let's take this side, the last number is minus infinity, then let's start -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, dot dot dot. Is it clear? समझ में आया आप लोगों को?
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वेरी इंटरेस्टिंग है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो हम लोग, लेट मी राइट इट और लेट मी गिव यू एग्जांपल। For example, 9 divided by 5. This is a rational number. Or I can give you some more example. Many numbers are there. 6 divided by 7. Any number. 8 divided by 9, etc. ओके, तो ये सब नंबर्स हैं। तो इसका डेफिनेशंस क्या होता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाओ तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, or let's write like this, P by Q, where P and Q are integers, है ना। इंटीजर समझ में आया ना? मीन्स P and Q कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर्स, you can take any numbers from these numbers. But very important point is that Q, the denominator, see this denominator, Q should not be equal to 0, है ना। इसको अच्छे से समझते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आराम से समझते हैं। है ना। तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो, 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि 1 को हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो नंबर है 1 and 1, दिस इज माई P, दिस इज माई Q। सो ए नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, मतलब P यहाँ पे 1 है, Q भी यहाँ पे 1 are integers, मतलब कोई भी नंबर से 1, and Q should not be 0, means the denominator is not 0. So this 1 is also my rational number. Example, let's take any number from it. Let's take 0. What about 0? Okay, 0 is a rational number. Answer will be yes, because I can add 0 as 0 by 1. 0 को हम 0 by 1 लिख सकते हैं. This is my P, this is my Q. According to the definition of a rational number, P and Q are integers. See, 0 is an integer. Can you see here? Integers are all the numbers. 0 is integers, Q is also integers. P and Q, both these should be an integers. And one more condition, that is Q should not be 0. So Q is not 0, it is 1. So I can say that yes, 0 is a rational number, because 0 can be written as in the form of 0 by 1. 0 is P, Q is 1, 1 is Q, and which is not equal to 0. So this is 0 is a rational number. Is it clear? Is it clear? है ना। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, you tell me, anyone, -1, is it a rational number? Yes, because -1 I can write -1 by 1. So here P is -1. P is -1.
अगर हम देखते हैं ये दिस इज -1, p is an integers and this is my q, so I can write -1 in the form p by q, where p and q are integers. -1 is also integers and 1 is also -1 is also integers and 1 is also integers, and this is the first condition. Second condition is also satisfied. Q should not equal to 0. See, q is not 0, so -1 is an rational number. Now if all numbers, that means what? All numbers are rational numbers. All integers, that means all, important point, integers are rational number. Very important point. All integers means all these numbers are rational number, because all these numbers can be written in the form p by q. -7 I can write -7 by c. -7 I can write -7 by 1. -6 I can write -6 by 1. That means this is p, this is q, this is p, this is q, this is p, this is q. Similarly 0 by 1, this is p, this is q, this is all number can be written divided by 1. So all these numbers are, all integers are your rational number. Now the question is, what is not a rational number, है ना? तो एग्जाम्पल देखते हैं और एक, जैसा कि let me bring this down. Let me bring this down. Example, some numbers you may get like this: 3 by 0, 5 by 0, 6 by 0. Are these numbers rational? Are these numbers rational? Rational? समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 के नीचे, 5 के नीचे, 6 अगर 0 होता है, क्या ये रैशनल नंबर्स होता है? Then your answer will be no, because see, 3 and 0, okay, this is my p, this is my q. According to the definition of rational number, आपको दिखाता हूँ, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, है ना? दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, जबकि p 3 है, q 0 है, ये दोनों इंटीजर्स है, बट q should not be 0, q should not be 0, but in this case here it is 0. This is my p, this is my q, p and q both are integer, 5 is an integer, 0 is also an integer. So according to the first condition of rational number, there are two conditions for a rational number. First, that p and q should be integers and q should not be 0. So first condition satisfied, p and q are integer, 5 is an integer, 0 is an integer, all numbers are integers. But second condition doesn't satisfy. Second condition says that your denominator should not be 0, but here 0, here 0. That means these are not rational number. No, since q equals to 0, q 0 है, इसलिए ये rational number नहीं है. Is that clear? समझ में आया? नेचुरल नंबर समझ में आ गया? होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, है ना? तो देखते हैं. सो ये और दो नंबर्स है, इनको हम बाद में देखते हैं. मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग 5 नंबर ही समझेंगे: नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर. तो ये दोनों हम बाद में करते हैं. है ना? आज कुछ बुक का क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज
1.1 अगर आप देखेंगे बुक में तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, इज ज़ीरो ए रैशनल, नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, is zero a rational number? Can you write it in the form? Can you write it in the form P by Q, P by Q, where P and Q are, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. So what will be your answer? What will be your answer? So is zero a rational number? मतलब ये कह रहा है कि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, because 0 I can write 0 by 1. All numbers, all integers can be written as divided by 1. That means denominator you can take 1. For example 2 you can write 2 by 1, 3 you can write 3 by 1, 4 you can write 4 by 1. So 0 I can write 0 by 1. So this is my P, this is my Q. P and Q both are integers because 0 and 1 are integers. We know that 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, all these numbers are integers. So 0 is an integers, so these are my integers, okay. So 0 is an integers, 1 is also an integer. So P and Q, 0 and 1 should be integers. Here they are integers. This is the first conditions. Second condition says that Q should not be 0. So Q here equals to 1. So it is not 0. That means what? 0 is a rational number. So you can write so what will be the answer? Is it clear? Is it clear? So yes. What will be my answer? Yes. 0 is a rational number. 0 is a rational number.
we can write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. To 0. Is it okay?